चलो, one last topic of SHM beta, damped oscillations. Damped oscillations. Damped oscillations मतलब बेटा the oscillations in which there is a loss of energy. There is a loss of energy, यानी कोई एक resistive force इस पे add कर रहा है, so that its oscillations is reducing with respect to your time. ठीक है ना? मान के चलो एक मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मान के चलो वाटर है, okay, and here there is a spring. To this spring there is a block attached which is kept in the water. ठीक है, और ये SHM कर रहा है in the water up and down because of the buoyancy force. इस पे क्या फोर्स लगेगा बेटा? एक buoyancy force लगेगा. वो buoyancy force के वजह से what is happening? The oscillations made by that one is right now reducing with respect to the time. उसी तरह से फ्रिक्शन भी हो सकता है, कोई भी एक रेसिस्टिव फोर्स के वजह से उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. तो उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? देख ली बेटा, रेसिस्टिव फोर्स F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स, उसके साथ एक रेसिस्टिव फोर्स भी लग रहा है, सो इट इज B इनटू योर V. यहाँ पर B क्या है बेटा? B is some damping coefficient. B is your damping coefficient. ठीक है, so FR मैं लिख सकता हूँ M into your ये, that is equals to minus of K into your X minus of some constant B into your velocity V. ठीक है ना? अब एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ? देखिए बेटा, M into your d square into your X divided by dt square, that is equals to minus of your K into your X minus of your B into your V is equals to 0. ठीक है ना? पूरे टर्म्स को अगर मैं एक जगह ले लूं तो आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर d square into your X divided by your dt square plus K by your M into your X plus B by your M into V can be written as dx divided by your dt must be equal to 0. तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ योर डैम्पिंग ऑसिलेशन. अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो विल बी गेटिंग द आंसर एज x इज इक्वल्स टू a इनटू योर cos ओमेगा t प्लस सम फाई. इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली जो इक्वेशन बनता है उसको हम लोग इस तरह से याद रखना है. तो जनरल इक्वेशन ऑफ एन डैम्पिंग ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच? d स्क्वायर into x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस kx by your m प्लस b by m into dx by dt. इसका सॉल्यूशन होता है मेरे पास x is equals to your a into cos omega t plus of your phi. इसको सॉल्व करने के बाद जो एक्चुअली अपने को फॉर्मूला यूज होता है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, मैं बता रहा हूँ. देखो फॉर्मूले यूज्ड जो हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स. द फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड. a is equals to your a naught exponential to the power of minus of b by 2m into your t. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा. ये इज एम्पलीट्यूड, a naught is your maximum amplitude. Okay, ये मतलब amplitude at any instant of time. A naught is a maximum amplitude, E is exponential, B is your damping coefficient, M is the mass of the particle, and T is your time. ठीक है ना? What is the B? I told you B is your damping coefficient. B is your damping coefficient. M is nothing but mass of particle, T is your time. क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला आपने यूज करेंगे इज इक्वल्स टू योर a naught exponential to the power of minus of b by 2m into your t. ठीक है? उसके बाद एक और एक फॉर्मूला यूज होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी is represented by omega. Omega is equals to under root of your k by your m minus b by 2 into your m whole square. इसके डेरिवेशंस पे मत जाइए क्योंकि ये जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत बड़ा डेरिवेटिव पार्ट है, लेकिन अपने लिए तो अपना तो नीट में नहीं है, लेकिन एम्स का जब एग्जाम हुआ करता था तो उस पर रेगुलरली इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेटा. तो देखो k बाई एम कैसे लिख सकते हैं बेटा? अपन बोलो, कोई बता सकता है? एज k इज इक्वल्स टू m इंटू योर ओमेगा स्क्वायर. तो k बाई एम कितना बन जाएगा बेटा अपने पास? ओमेगा नॉट स्क्वायर. इसको मैं ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करूँ.
So omega will become how much for me? Omega is equals to under root of your k by m is right now omega naught square minus b by 2 into your m into your whole square. तो ये एक अनदर फॉर्म होता है ओमेगा निकालने का रिलेशन. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Omega naught is your natural frequency. Omega naught is your natural frequency. B is your damping coefficient. M is your mass of the particle. बस ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है बेटा. और एक ए वाला फॉर्मूला. तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए A is equals to your A naught exponential to the power of minus of B by 2m into your T. ठीक है. और ओमेगा इज इक्वल्स टू your omega naught square minus of B by 2m into your whole square. Clear बेटा? Is that clear? Is that clear? अब इसका ग्राफ देखो बेटा, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है. तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा आता है इस पे देखो. डैम्पिंग कोएफिशिएंट का ग्राफ देखो इस तरह से कुछ बनता है. बेसिकली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर कहीं पर है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए नॉट. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होते होते ऐसा जाएगी, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, एंड फाइनली इट इज बिकमिंग फ्रॉम ए जीरो. इसको अगर मैं एक ओवरलैपिंग अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस विल बी योर ओवरलैपिंग. ऐसा कुछ, ठीक है ना. तो ये जो ग्राफ आ गया, दिस वन इज योर ए नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ बी बाई 2m इंटू टी. सो डैम्पिंग कोएफिशिएंट का ग्राफ ये होता है बेसिकली. क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? तो पहला वाला फॉर्मूला जो याद रखना है अपने को, A is equals to A naught exponential to the power of minus B by 2m into your T. और ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ योर B by 2m into your 2 by m into your whole square. ये वाला सेकंड फॉर्मूला. और एक थर्ड वाला है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. क्या डैम्पिंग में एनर्जी लॉस होती है? यस. तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है उसके अंदर? लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कितना होता है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी बताओ बेटा. मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू योर ए स्क्वायर. ये होता है ना टोटल एनर्जी. तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू योर हाफ इंटू योर एम इंटू योर ओमेगा स्क्वायर. ए की वैल्यू मेरे पास मालूम है. अभी ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ बी बाई 2m. तो वैल्यू यहाँ पर डाल दो. तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास ए नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस बी बाई 2m इंटू टी होल स्क्वायर. तो ये बन गया मेरे पास E इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर और ए नॉट स्क्वायर. ये बन गया एक्सपोनेंशियल. तो स्क्वायर में से 2 चले जाएगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा? एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाई ये 2 कट जाएगा. T इज योर m इंटू योर t. ठीक है. तो ये जो है ना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कैन रिटन एज E इज इक्वल्स टू E नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाई योर m इंटू योर t. तो ये हो गया थर्ड फॉर्मूला. ठीक है. बस ये 3 फॉर्मूलेस अपने को याद रखना है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. फिर से एक बार देख लीजिए जल्दी से. एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू A नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस B बाई 2m इंटू टी. और ओमेगा का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b बाई 2m इंटू होल स्क्वायर. और मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू E नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाई m इंटू योर t. क्लियर है बेटा? छोटा सा नोट लिख लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन, इफ b by 2m is lesser than ओमेगा नॉट. इसके अंदर देख लीजिए ये जो है ना ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b by 2m होल स्क्वायर में अगर b by 2m है ना ओमेगा नॉट यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है, देन इट इज नोन एज अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन. ठीक है. उसी तरह से इफ b by 2m is equal to your natural frequency, इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस. ठीक है ना. और थर्ड वन, if b by 2m is greater than natural frequency, greater than natural frequency, इसको बोलते हैं अपन ओवर डैम्प्ड.
ओवर डैम्प, ये याद रखना है थियरी क्वेश्चंस के लिए। If b by over 2m is lesser than omega naught, it is known as under damped. ठीक है ना? In the same way, if b by 2m is equals to omega naught, it is known as critically damped. इसी तरह से b by 2m is greater than omega naught, it is known as of your over damped. Over damped मतलब क्या बेटा? लॉस ऑफ एनर्जी और ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा ओवर है, क्रिटिकली मतलब थोड़ी बहुत, ऐसा वाला कंडीशन याद रखना। इसमें एक एनसीईआरटी में ग्राफ है, ये ग्राफ को बस आप ऐसे ही याद रख लीजिए, जस्ट ड्राइंग द ग्राफ फॉर दिस वन। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, वन ऑसिलेशंस विल कम लाइक दिस और फाइनली ऐसा हो जाए। इसको अपन बोलते हैं अंडर डैम्प, इसको बोलते हैं अपन अंडर डैम्प। उसके बाद देखिए बेटा, यहां से यहां तक आ रहा है बेसिकली, यही पॉइंट्स है, एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही ग्राफ है। इसको अपन बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प। ये ग्राफ ये है, ये ग्राफ बी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकली डैम्प। और थर्ड वन जो है ना बेसिकली, ये बस यहीं से स्टार्ट होते हुए बेसिकली ऐसा कुछ बनता है। ये हो गया सी, सी ग्राफ, और इस सी को बोलते हैं अपन ओवर डैम्प, सी को बोलते हैं अपन ओवर डैम्प, isn't it? अंडर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प, ओवर डैम्प, बस इतना याद रखो इसके लिए। b by 2m is lesser than omega naught, it is known as of your under damped. अगर b by 2m is equals to omega naught, it is known as critically damped. b by 2m is greater than omega naught, it is known as of your over damped. क्लियर है? Is that clear? चलो इस पे न्यूमेरिकल देखो कैसा बनते हैं। See this question. The amplitude of a damped oscillator becomes 1/3 in 2 seconds. ठीक है? If its amplitude after 6 seconds is 1/n times the original amplitude. The value of n is चलो बताइए, giving you options: 3 square, cube root of your 2, third one is cube root of your 3, and fourth one is 3 power 3. Question बढ़िए। The amplitude of damped oscillator becomes how much? 1/3 in 2 seconds. If its amplitude after 6 seconds is 1/n times the original amplitude, then the value of your n is how much पूछ रहा है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना है बेटा अपने पास? ये इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b by 2m into your t। ये कितना बन गया बेटा यहाँ पर देखो, इट इज बिकमिंग 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट? एम्पलीट्यूड, यानी ए की वैल्यू हो गई मेरे पास ए नॉट डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b by 2m into कितने टाइम में बेटा? इन 2 seconds, isn't it? तो a naught और a naught चले गया, तो this will become for me 1/3 is equals to exponential to the power of minus b by 2m exponential to the power of b by 2m to the power of, ये कितना हो जाएगा? 2, एक्सपोनेंशियल का ही 2 है ना बेटा। ये क्या है यहाँ पर? इंटू 2, एक्सपोनेंशियल इंटू दिस वन इज नथिंग बट इक्वल टू योर 2। ठीक है ना? अब पूछ रहा कहां पर? t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स।
t is equals to 6 seconds. देखो क्वेश्चन में एक बार, if its amplitude after 6 seconds is 1 by n times the original amplitude, 1 by n times the original amplitude, तो कितना हो जाएगा? तो ये t is equals to 6 seconds के पास a is equals to a naught exponential to the power of minus b by 2m to the power of, ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम, ठीक है ना। अब एक्सपोनेंशियल निकालने का तरीका देखो बेटा, यहाँ पर देखो जरा सुनो, यहाँ पर जो है ना एक्सपोनेंशियल, ये जो पावर है ना 2 का, वो 2 का पावर आप 1/3 को ट्रांसफर कर लो, तो ये बन गया 1/3 टू द पावर ऑफ, अगर 2 है तो ये बन गया वहां पर 1/2, तो ये बन गया मुझे एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाई योर 2m, सिंपल मेथड। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस, ये जो वैल्यू है ना इस पे डाल दो, तो इस पे अगर मैं डालूं तो ये कितना बन जाएगा? ये इज इक्वल्स टू a नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाई 2m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 टू द पावर ऑफ 1/2 टू द पावर ऑफ योर 6, ये कितना जाएगा बेटा? 2 1s are 2 3s are 6, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम फॉर मी 1 by a is equals to your a naught 1/3 to the power of 3, यानी this one is a naught divided by 3 power 3, यानी a is equals to a naught 3 power 3 is 27. This will be the answer. So 3 power 3 will be the answer for this. देख लो फिर से एक बार, ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 1/3 टाइम्स, तो 1/3 आया ना बेटा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल निकालने का तरीका, यहाँ पर जो भी स्क्वायर आएगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाई 2m के पास जो 2 आया ना, या 2 है n है जो भी है, जब पावर ट्रांसफर करोगे तो दैट विल बिकम फॉर मी, या पावर ट्रांसफर करोगे तो 1/3 के पास कितना बन जाएगा? वो 1/2 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो 1/4 बनता, या 5 होता तो 1/5 बनता, 6 होता तो 1/6 बनता, ओके, यहाँ पर 3 होता तो 1/3 बनता। दैट इज अ बेसिक रूल टू डू द प्रॉब्लम ऐसे वाले, वरना आप लॉग एक्सपोनेंशियल डाल के लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लीजिए, 2 and 2 विल कैंसिल, कहाँ है 2 and 2 कैंसिल होने के लिए? हाँ कैंसिल होगा, तो जब आपका वर्किंग और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया, वो पावर मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। करने का तरीका है वो। देखो और एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, अभी ये जो मेथड मैंने करवाया, अभी मान के चलो amplitude becomes 1/2 of maximum amplitude, ये आप लोग ट्राई करो। आफ्टर 4 seconds find amplitude after 12 seconds, find amplitude after 12 seconds। एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है? 1/2 ना बेटा, 1/2, यानी एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? a is equals to a naught exponential to the power of minus b by 2m into your t, ठीक है ना। तो अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? a naught by 2 है, तो ये डालो यहाँ पर a naught by 2 that is equals to a naught exponential to the power of minus b by 2m, यहाँ पर हो गया पावर कितना? 4, ओके। अब यहाँ पर देखो a naught कैंसिल हो गया, तो 1/2 is equals to exponential to the power of minus b by 2m to the power of 4 है, तो 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बनेगा कितना? 1/2 to the power of 1/4 is equals to exponential to the power of minus b by 2m, ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है? एम्पलीट्यूड आफ्टर 12 seconds, दैट मींस एट t is equals to 12 seconds, एम्पलीट्यूड कितना होगा? a is equals to a naught exponential to the power of minus b by 2m into t is your 12 seconds, तो ये बन गया मेरे पास a naught exponential to the power of minus, ये जो है ना exponential to the power of minus b by 2m, तो ये वैल्यू लेके आके यहाँ से इस पे डाल दो, तो इसकी वैल्यू लेके आके इस पे डाल दो,
तो ये कितना बनेगा 1/2 टू द पावर ऑफ 1/4 इंटू योर 12 पावर। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 1 और 4 3 12। तो ये बन गया मेरे पास कितना बेटा ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 पावर 3, यानी ए बन गया मेरे पास ए नॉट बाई योर 8। तो ये हो गया मेरे पास ये इज इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 8। आ गया, एक बार देख लो जल्दी से। आ गया बेटा, क्लियर है? मैं आप लोग को एक्सपोनेंशियल बहुत सिंपली निकालने का तरीका बताया बेटा। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को निकालने का तरीका देखो, अगर ये प्रॉब्लम आप ऐसा नहीं करते तो आपको लॉग लगाना पड़ता, एलएन का फॉर्मूला लगाना पड़ता और कैलकुलेशन करना पड़ता, बहुत झंझट हो जाती है इसमें। तो सीधा सीधा ट्रिक है, इसको 1 से 2 बार आप ट्राई कर लो, आराम से निकल जाता आप। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ये प्रॉब्लम और कर लेते हैं। A mass of 2 kg oscillates on a spring with force constant 50 Newton per meter. By what factor does the frequency of oscillation decreases when a damping force with B is equals to 12 unit is introduced? ट्राई करिए बता। ओमेगा का फॉर्मूला लगाना है। Mass of 2 kg is oscillating on a spring. Okay, mass कितना दे रखा है 2 kg is oscillating on a spring with a force constant यानी k की वैल्यू दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर. By what factor does the frequency of oscillation decreases when a damping force with B is equals to 12 unit is introduced? यानी परसेंटेज पूछ रहा है। देखो बेटा, अपने पास जो फॉर्मूला बना हुआ है डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला ओमेगा डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर के बाई योर एम माइनस बी बाई योर 2 इंटू योर एम होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ओमेगा नॉट क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज योर के बाई योर एम, दैट इज अंडर रूट ऑफ योर के की वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में 50, मास कितना दे रखा है 2, 2 1 2 25 रूट 25 कितना बनेगा 5, दिस इज योर 5 रेडियंस पर सेकेंड। तो डैम्पिंग फोर्स बन गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ योर, दिस इज योर 5 स्क्वायर बनेगा ये, isn't it, माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में, डैम्पिंग कांस्टेंट b की वैल्यू दे रखा है b इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स।
ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास कितना दे रखा है 2, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये बन रहा कितना देख लीजिए बेटा, टू 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो ये बन गया मेरे पास अंडर रूट 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9, तो रूट 25 माइनस रूट 9 इज रूट 16 मतलब ये बन जाएगा 4, सो इट इज 4 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, अब तो फाइनल परसेंटेज निकालने का तरीका, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू योर 100 इज योर परसेंटेज। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर परसेंटेज में फाइनल वैल्यू मतलब ओमेगा डी, तो डैम्पिंग फोर्स माइनस इनिशियल वैल्यू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इंटू 100, तो डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू डाल दो, डैम्पिंग की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा डी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, ओमेगा डी इज इक्वल्स टू 4, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 5 into 100, so that will be equal to your how much, minus 20%, होता है ना बेटा, 4 minus 5 minus 1, isn't it, 5 2 जा 20, तो ये हो गया 20%, yeah, decreases by 20%, decreases by 20%। आ गया सभी को, हमारी क्वेश्चन लिख लीजिए, the average kinetic energy of a simple harmonic oscillator is 2 joules and its total energy is 5 joules. Its minimum potential energy is how much? Try करें। Average kinetic energy of the simple harmonic दे रखा है बेटा, कितना है 2 joules। मैक्सिमम कितना होता है बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी ये करवाया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ योर के एवरेज, यानी दैट इज इक्वल्स टू 2, एवरेज की वैल्यू दे रखा है 2, दैट विल बी इक्वल टू 4 जूल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी इज गिवन इन द प्रॉब्लम एज 5, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 4 प्लस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालना है, टोटल एनर्जी इज गिवन एज ऑफ योर 5, तो मिनिमम एनर्जी कितनी आ गई बेटा, यू मिनिमा इज इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ 4, दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल। ये वैल्यू अपने को याद रखना है, मैंने डिराइव भी किया था, के मैक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ योर के एवरेज। ठीक है, इज इट क्लियर? मैंने आप लोगों को टेबल बताया था ना बेटा, एक एसएचएम है और काइनेटिक एनर्जी, अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है तो ये 2 ओमेगा होती है,
दूसरा टाइम पीरियड टी होता है तो इसका टाइम पीरियड t/2 होता है। अगर ये f होता है तो ये 2 टाइम्स ऑफ f होता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ओमेगा है तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस SHM पार्टिकल व्हिच इज मेकिंग ऑसिलेटर विल बिकम हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ दैट वन। अगर ये k है तो यहाँ पर बनेगा 2 टाइम्स ऑफ k, ठीक है। ओके चलो ये वाला देखो, 2 pendulums of length 1 meter and 1.44 meter start swinging together. After how many oscillations will they again start swinging together? इंपॉर्टेंट मॉडल है बेटा। ऑसिलेशंस क्या रिलेशन में होता है बेटा, टाइम पीरियड और ऑसिलेशंस का रिलेशन क्या होता है, याद है किसी को? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रूट टी। टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर l बाई g। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ योर l। और टाइम पीरियड और l का रिलेशन क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, isn't it? So n will be inversely proportional to your how much? Time period will be equal to 1 by n. So 1 by n is proportional to root of your l, ठीक है ना। तो I can say that therefore अगर इसके oscillations n है तो n times of t1 will be equal to your n times of your t2, यानी n into, अगर ये oscillations में m ले लो तो this is m oscillations of t2। तो oscillation का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर फर्स्ट लेंथ कितना है मेरे पास 1 मीटर डिवाइडेड बाई g, दैट इज इक्वल्स टू योर m इनटू, तो ये बन गया मेरे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसका लेंथ कितना है 1.44 डिवाइडेड बाई g। 2 पाई रूट g will get cancelled, so this will become for me root 1 is nothing but 1, so it is n, this is your n is equals to your m into your root 1.4, approximately I can take that one as of your 2, isn't it? So I can write here n by your m is equals to root 2, that means 12 by 10, isn't it? 1.44, so that will be equal to 12 by 10. So they swing together after shorter pendulum has been completed how many oscillations? 12 oscillations, and longer one is completing how many? 10 oscillations. Therefore 24 and 20 so on, isn't it? So इसका oscillations में क्या हो जाएगा n by your m. That means I can say that they swing together after shorter pendulum is n beta, completes 12 oscillations. 12 oscillations, and longer one 10 oscillations, and
thereafter कितना बेटा, n will be equal to उसका डबल 24, m will be equal to 20, ऐसा 12 24 फिर उसका 12 टाइम्स, फिर 20 का फिर 10 टाइम्स, वैसा कुछ कर लेते चले जाते। ठीक है बेटा, शॉर्टर पेंडुलम स्मॉलर पेंडुलम का रिलेशन ये याद रखना अपने को, n into your t1 is equals to your m oscillations of your t2। ठीक है, वॉइस इज स्टक इन नेक्स्ट प्रॉब्लम हो रहा है, देखता हूँ एक मिनट। अभी आ रही बेटा वॉइस क्लियरली? Infinite springs with force constant k, comma 2k, comma 4k, comma 8k, so on, are connected in series, infinite series. The effective force constant is how much? The effective force constant of spring will be, बताइए, सीरीज है ना बेटा, तो सीरीज में के इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? 1 by k effective is equals to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 plus so on up to infinity। ये हो गया मेरे पास 1 by k1 की वैल्यू है k, 1 by k2 की वैल्यू है 2k plus 1 by 4k plus 1 by 8k plus so on up to infinity। ठीक है ना, तो इसमें 1 by k मैं कॉमन ले लूं, तो ये होगा मेरे पास 1 by k कॉमन इंटू
1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus so on up to your infinity. So this is like geometric progression beta. Geometric progression क्या है? S infinity is equals to your first term divided by 1 minus common ratio. First term कितना है 1 divided by 1 minus common ratio कितना है 1 by 2. तो कितना बन जाएगा बेटा 1 divided by 1 by 2 यानी ये बन जाएगा 2. ठीक है ना. So that is equals to here ये बन जाएगा 1 by k into this is 1 divided by 1 minus 1 by 2. So that will become formally 2 by k. So k effective कितना बन गया k effective is equals to k divided by 2. K effective is equals to k divided by 2. This will be the answer. Very good. Clear beta? Sure, next question. The displacement of a particle, the displacement of a particle varies with the time as x is equals to 12 sine omega t minus 16 sine cube omega t. If its motion is SHM, then maximum acceleration is चलो ट्राई करो. ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का. Sine 3 theta is equals to 3 into sine theta minus 4 into sine cube theta. तो गिवन क्या है मेरे पास x is equals to 12 into sine omega t minus 16 into sine cube omega into t. तो इसमें से मैं 4 बाहर निकालूं तो this will be 4. This one is 3. 4 3 is 12 into sine omega t minus 4 into sine cube omega into t. तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 इंटू ये जो ये फॉर्म में नहीं है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज साइन 3 थीटा. मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ योर 3 ओमेगा इंटू टी. ठीक है ना. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा ए मैक्स विल बी इक्वल टू योर 3 ओमेगा होल स्क्वायर इंटू 4 मैक्सिमम वैल्यू. ओके एक्सेलरेशन ही पूछ रहा ना बेटा. इसको मैं स्मॉल ए से लिखता हूँ तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. ए मैक्स विल बी इक्वल याद है ना. अगर एक्स को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आती फिर वेलोसिटी की डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आती. तो इट इज द रीजन इट इज बिकमिंग 3 ओमेगा स्क्वायर इनटू 4 यानी 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा 9 एंड 4 ये बन गया मेरे पास 36 ओमेगा स्क्वायर. तो ए मैक्स विल बी इक्वल टू 36 ओमेगा स्क्वायर. याद है सभी को ये. एक्स को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आता फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आ जाता. क्लियर है. डन.
a mass capital M is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released. So that the mass executes SHM of time period capital T. If the mass is increased by M, the time period becomes (5t/3). What is the ratio of small m divided by capital M? Try करिए. Mass capital M is suspended from the spring. तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T is equals to 2 pi under root of your capital M divided by K. Okay. Then उसका मास इंक्रीज बाय स्मॉल m हुआ, तो जब टाइम पीरियड कितना बना? 5t divided by 3 is equals to 2 pi under root of your, ये बन गया कैपिटल M plus small m divided by your K. Okay. रेशियो ऑफ पूछ रहा है, यानी इन दोनों की इक्वेट कर लो, यानी इक्वेशन 1 को लेके जाके इक्वेशन 2 में डाल दो. दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो व्हाट यू डू इज सब्स्टिट्यूट 1 इन योर 2. तो ये बन जाएगा 5/3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाई K. That is equals to 2 pi under root of capital M plus small m divided by K. ठीक है ना? तो इसमें से 2 पाई और 2 पाई चले जाएगा, रूट के और रूट के भी चले जाएगा. तो बचा कितना बेटा? दोनों के कर दो. तो दिस विल बी इक्वल टू 5/3 into root m is equals to under root of your capital M plus small m. तो रूट निकाल दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 5 is 25, 3 3 is 9. ये हो गया कैपिटल M, that is your capital M plus of your small m. ओके, पूरे कैपिटल M टर्म्स को एक जगह ले लो, तो कितना बन जाएगा बेटा? सो 5/9 माइनस दिस कैपिटल M, तो ये बन जाएगा 16/9 टाइम्स ऑफ कैपिटल M, that is equals to small m. स्मॉल m को इधर ले लो, ठीक है ना? तो ये बन गया मेरे पास स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 9. दिस विल बी द आंसर. डन बेटा? देख लो एक बार फिर से.
क्लियर है बेटा? ओके, वेरी गुड। इक्वेशन करके बताओ। SHM is represented by d square into x divided by dt square plus alpha into x is equals to 0. What is its time period? What is its time period? सिंपल क्वेश्चन है, बता देना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट कर लीजिए, आ जाएगा। d square x divided by dt square will be equal to minus of alpha into x, यानी a is equals to minus of alpha into x, है कि नहीं? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? t is equals to 2 pi under root of your displacement divided by acceleration, यानी that is equals to 2 pi under root of your x divided by acceleration is your alpha into your x. Alpha will get cancelled, so that is your 2 pi divided by root of your alpha. That will be the answer. ठीक है ना? Sure. Next question. Two SHMs are represented by the equations y1 is equals to 0.1 into sine 100 pi into t plus pi by 3. y2 is equals to 0.1 into cos pi t. What is the phase difference? What is the phase difference of the velocity of particle 1 with respect to velocity of particle 2? ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन। SHM दे रखा है दो पार्टिकल्स का, y दे रखा है, तो आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी। देखो y1 is equals to 0.1 into sine, this is 100 pi into t plus of your pi by 3. तो v1 का डिफरेंशिएट करो, v1 will become for me how much बेटा? 0.1, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, ये हो गया 100 pi into t plus of your pi by 3, और उसके साथ आएगा एक और एक टर्म, दैट इज नथिंग बट 100 पाई इंटू योर 100 पाई। आ गया बेटा? उसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? y2। नेक्स्ट टर्म क्या है? y2। तो y2 की वैल्यू कितनी है बेटा? एक बार देख लो। y2 is equals to कितना है? 0.1 into your cos of your pi t। इसका डिफरेंशिएट करो, v2 आएगा, v2 is equals to 0.1 बाहर, दिस वन विल बिकम फॉर मी, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sin, so it is your minus of sin pi into t, उसके साथ एक पाई बाहर आएगा, cos of omega t pi। ये साइन फंक्शन है, ऊपर का कॉस फंक्शन है, तो दोनों को एक ही फंक्शन में लाने की कोशिश करो, तो v2 विल बी इक्वल टू, अगर मैं माइनस साइन निकाल रहा हूं तो दिस कैन बी रिटन एज ऑफ योर 0.1 इनटू योर cos पाई t प्लस ऑफ योर पाई बाय 2। यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा। देखो ये माइनस है ना बेटा, ये साइन फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन है, ये कॉस है और ये साइन है। फेज डिफरेंस निकालना बोले तो दोनों को कॉस में रखो या दोनों को साइन में रखो, तो यहाँ पर माइनस साइन पाई टी है, तो माइनस निकाल रहा था, आई एम कन्वर्टिंग दैट वन एज कॉस ऑफ योर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस मतलब कितना हो जाएगा बेटा? ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, देयरफॉर डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू योर फाई 1 माइनस ऑफ फाई 2। डिफरेंस निकालना है बस, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, पाई बाय 3 माइनस ऑफ योर पाई बाय 2, so that will be equal to minus of your pi by 6। 1 with respect to 2 पूछा उसने, 1 with respect to 2, so it is minus of your pi by 6। आ गया?
थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा। V1 में कॉस में आ रहा, Y2 को डिफरेंशिएट करो तो साइन में आ रहा, तो दोनों का साइन में रखो या दोनों को कॉस में रखो। तो माइनस साइन को निकालने का तरीका क्या है, साइन थीटा कैन बी रिटन एज ऑफ योर साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन निकल गया, माइनस था तो इसको फ्लिप कर लिया मैंने यहाँ पर। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? आ गया बेटा? चलो consider x is equals to 4 mm sine 40 pi t plus pi by 4। ठीक है ना, ये इक्वेशन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका एम्पलीट्यूड कितना, नंबर बी इसका फ्रीक्वेंसी कितना एन, और नंबर सी इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी, नंबर डी इसका फेज कांस्टेंट कितना। एक मिनट बेटा, स्ट्रक हो रहा है। इसका फेज कांस्टेंट कितना, नंबर ई फेज एट ई इक्वल टू हाफ ऑफ द पीरियोडिक टाइम। ये कितना होगा? चलो फर्स्ट वाला तो डायरेक्टली बोल सकते हो आप आंसर। x इज इक्वल्स टू 4 mm, यानी एम्पलीट्यूड कितना बन गया, 4 mm। फोर mm यानी 4 इंटू 10⁻³ मीटर। फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, दिस इज योर ओमेगा 40 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये पाई चले गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 20 हर्ट्ज। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 40 पाई सेकेंड्स। ठीक है ना। इस फेस कांस्टेंट कितना होता है, पाई बाई 4, फेस कांस्टेंट हो गया पाई बाई 4, है ना, यही फेस कांस्टेंट होता है ना इनिशियल फेस। नाउ फेज है टी इक्वल टू, यानी हियर टी की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, यानी टी बाई 2। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई by over omega. The 2 will get cancelled. So pi by omega. That is a pi divided by omega value is how much better? 40 pi. This pi will get cancelled. That is 1 by 40 seconds के पास पूछ रहा है indirectly. So phase angle will be equal to omega t plus alpha. That is omega value is 40 pi into time is your 1 by 40 plus alpha value. Alpha value is given how much in the figure you see? Pi by 4, pi by 4। तो ये 40 ये 40 चले गया, तो this will be equal to pi plus pi by 4। तो this will become for me 5 pi by 4। So this will be the phase। ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप याद रख लो बेटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और tan 90 प्लस थीटा कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ योर कॉट थीटा। क्लियर है? क्लियर बेटा?
Clear? Any doubt to anyone? Chalo. The total energy of a particle executing SHM is proportional to what beta? Can you tell me? What is the total energy formula beta? Total energy is equals to half into m into omega square into a square. That means total energy is directly proportional to mass. Total energy is directly proportional to omega square. That is proportional to 2 pi into your n whole square. That means that is proportional to your n square. Okay. And the total energy is directly proportional to the square of the amplitude. Isn't it? So total energy is directly proportional to square of frequency, directly proportional to the mass, and directly proportional to the square of your amplitude. Is that clear, beta? Is that clear? Next question. The time period of a particle in SHM is 8 seconds. At t is equals to 0, it is at the mean position. The ratio of the distances traveled by it in the first and second seconds is okay. The time period of a particle in SHM. The time period of a particle in SHM is how much beta? 8 seconds. At t is equal to 0, it is at your mean position. The ratio of distance traveled by it in the first second and in the second second is how much? Can anyone write? Initially t is equal to 0 के पास क्या है बेटा? फेज कितना है? 0. फेज 0 है मतलब इक्वेशन विल बी x is equals to your a into sin omega into t. तो ये हो गया ये into sin ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई कैपिटल t into your small t. तो ये बन गया मेरे पास ये into sin 2 पाई बाई इनिशियल टाइम कितना दे रखा है बेटा 8 सेकेंड्स तो 8 into your t. तो ये बन गया 2 1 जा 2 4 जा तो इक्वेशन बन गया x is equals to a into your sin pi into t divided by 4. तो ये हो गया x की वैल्यू इनिशियल.
ठीक है ना. Now distance traveled in the first second क्या होगा? The distance traveled in first second. Distance traveled in the first second is x1 is equals to a into sine pi by 4. T की वैल्यू कितनी है? 1. That is equals to a into sine pi by 4. That will be equal to a by root 2. The distance traveled in the first 2 seconds कितना होगा? The distance traveled in the first 2 seconds कितना होगा बेटा? मान के चलो हम x डैश लिख रहा हूँ. That is a into sine pi by 4 into 2 seconds. First 2 seconds पूरा. तो 2 1s are 2 2s are. तो ये होगा मेरे पास x is equals to your अगर स्टक हो रहा है बेटा लैपटॉप. हाँ, तो दिस विल बिकम फॉर मी a into sine pi by 2. ये बना कितना? a. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सेकंड सेकंड कितना होगा? Therefore distance traveled in second. Distance traveled in second. तो x2 लिख रहा हूं मैं. x2 will be equal to x dash minus x1. That is nothing but a minus a by root 2. तो ये कितना बनेगा? a कॉमन इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझने की कोशिश करो. डिस्टेंस पूछ रहा हूँ सेकंड में, नॉट इन 2 सेकंड्स. तो पहले मैंने क्या किया? डिस्टेंस से ट्रैवल्ड आई बॉट इट इन 2 seconds. तो कितना है मेरे पास? ये. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड कितना हो जाएगा बेटा? x2 इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड में से अगर सेकंड निकाल दो मैं, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर मी, है कि नहीं? तो अब ये आ जाएगा मेरे पास रेशियो. Therefore x1 divided by x2. x1 की वैल्यू कितनी है? a by root 2 divided by this one is a into 1 minus 1 by root 2. ये और ये चले गया, तो this will be equal to your, ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 by this one is root 2 into, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? root 2 minus 1 divided by root 2. ये root 2 चले जाएगा. That will be equal to 1 by root 2 minus 1. This will be the answer. Clear? देख लो बेटा फिर से एक बार अच्छी तरह से. चलो ऐसे वाले क्वेश्चन आप आराम से कर सकते होंगे, फिर भी एक मैं करा देता हूँ. थ्री निकाल के फिर 2 को निकालना पड़ता. पहले डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकंड 3 सेकंड्स, वैसे इंडिविजुअली करते जाना पड़ेगा फिर.
परसों मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाया था, ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो क्या, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, द पार्टिकल्स P and Q starts from the origin and executes a simple harmonic motion along x-axis with the same amplitude, but the period is 3 seconds and 6 seconds. The ratio of the velocity of the P and Q when they meet will be equal to how much? ट्राई कर सकता है। The particles P and Q starts from origin and executes a simple harmonic motion along x-axis with the same amplitude, but periods are 3 seconds and 6 seconds. The ratio of the velocity of the P and Q when they meet will be equal to how much? See, the particle will meet only at the mean position when P completes one oscillation and Q completes how much, beta? Half of an oscillation, because the time periods are given 3 seconds and 6 seconds, isn't it? So I can say that the particles will meet at mean position when P completes one oscillation, Q completes half an revolution, half an oscillation, isn't it? So velocity of the P divided by velocity of Q will be equal to, velocity is A into omega of P divided by A into omega of Q. Amplitude for both of them are same. So omega is nothing but 2 pi by over T. So it is 2 pi by T of your P divided by 2 pi of your T of your Q. 2 pi will get cancelled. So it is T of Q divided by T of your P. So T of Q is given 6, T of P is given 3. So this will be 3 ones are 3 twos are. That means 2 by 1. So 2:1 will be the answer. Done? Sure. Next one. The maximum velocity and maximum acceleration of a body moving in a simple harmonic oscillator are 2 meter and 4 meter. Then angular velocity is how much? Again, direct question right now for this one. V max is equals to your A into your omega, and A max will be equal to your V max is equals to A into your omega. Okay, and maximum acceleration is minus of omega square into your A. Maximum velocity and maximum acceleration. Okay, then angular velocity is how much? That means if I take the ratio of this one, V max divided by your A max divided by A max, or V max divided by A max, or A max divided by V max, minus of omega square into your A divided by A into your omega. A gets cancelled, omega gets cancelled. Magnitude, if I am taking, this will become for me omega, isn't it? So omega will be equal to, A max is given, the maximum velocity is given for me as a fever 2, and maximum acceleration is given as 4. That means 4 divided by 2. 2 ones are 2 twos are. So this will be 2 radians per second square. Sorry, seconds. 2 radians per second. D option will be the answer. Exactly. Next one. A particle has a simple harmonic motion. The equation of its motion is x is equal to 5 into sine 40 minus pi by 6, where x is the displacement. The displacement of the particle is 3 units, then its velocity will be equal to your how much? Direct question. What is amplitude given, beta? Amplitude is given as 5. And omega value is given as of your 4. If the displacement of the particle is 3 units, that means y is equals to 3 units.
then its velocity is how much? We know the velocity formula. V is equals to omega under root of your a square minus of y square. So omega value is 4 under root of a square is 5 square minus y is equals to 3 square. So it is equals to 4 under root of 5 square is nothing but how much? 25 minus 3 square is 9. So it is 4 into root 16, 4. 4 4s are 16. So T will be the answer. There we go. Next one. A particle is executing the simple harmonic motion with a period of 6 seconds and amplitude 3 centimeters. Maximum speed in the centimeter per second will be equal to how much? See, V max will be equal to A into omega beta. So that is equal to A. Omega value is 2 pi by your capital T. A is what here? Amplitude. So particle executes 6 seconds. Amplitude is given 3 into 2 pi. T is given as 6. 3 ones are 3 twos are 2 and 2. So that will be equal to how much? Pi centimeter per second. So P will be the answer. Very good. A body of mass 5 kg is executing the simple harmonic motion about a point with an amplitude of 10 centimeter. Its maximum velocity is 100 centimeter per second. Its velocity will be 50 centimeter. At what distance is asking? Now see, given in the problem for me is V max is equals to 100 centimeter per second. Okay. And the mass is given as of your 5 grams. And amplitude is given as of your 10 centimeter. Velocity will be equal to 50 centimeter. Its velocity V is equals to 50 centimeter per second at what distance? That means Y is equals to how much? So V max formula I know. So V max is equals to A into omega. V max is 100. A is your 10 into your omega. So this one will get cancelled. So from this one, I got the value of omega. Omega is equals to how much better? 10 radians per second. So this is the value of omega. So now velocity formula I can use. V is equals to omega under root of your a square minus y square. Velocity is given in the problem as 50. Omega value is 10 under root of a value is 10 square minus y value is how much? Okay, so how much I'll be getting? Can you try it out better? So simplify it. This zero is gone. 5 is equals to under root of 10 square is 100 minus y square. Okay, so if I'm taking the root, it will be 25 is equals to 100 minus y square. Okay, so simplify for y. See how much I'm getting the value of y. Pi root 3. Very good. So y is equals to 5 root 3. C will be the answer. Next question. The simple pendulum performs a simple harmonic motion about x is equal to 0 with an amplitude A and time period t. The speed of the pendulum at x is equals to a by 2. Again, this is a direct question. V is equals to omega under root of your a square minus of y square or x, anything I can take. That is omega under root of a square minus x square. Anything is fine. So V is equals to omega value is 2 pi by capital T. This one is under root of amplitude is a square. X value is also your a square divided by 2 square is 4. So that will be equal to 2 pi by your capital T into this one is under root of 3 into a square divided by 4. So that will become for me root 3 into your a into this will become for me 2 and 2 will get cancelled. So this will be equal to your pi divided by t because root 4 and 2 will get cancelled. This 2 and this will get cancelled. So it is root 3 a pi, root 3 a pi. First option will be the answer. Done? Very good. If x is equal to a into sine omega t plus pi by 6 and x dash is equal to a into cos omega t, then what is the phase difference between the two waves? Okay. What is the phase difference between the two waves? So x is equals to a into your sine omega t plus of your pi by 6.
and x dash is how much for me? A into your cos omega into t. So convert that one into cos into sine beta. This will become for me A into sine omega t plus of your pi by 2. So phase difference will be equal to omega t plus of your pi by 2. Phi 2 minus phi 1. So this one is totally phi 2 and this one is your totally phi 1. So that will be equal to omega t plus pi by 2 minus omega t plus your pi by 6. Isn't it? So this one will get cancelled. So this will come out for me pi by 3. So A will be the answer. Very good. Next one. I did this question right now. Two simple harmonic motions are represented in the equation y1, y2. The phase difference of the velocity of the particle 1 with the respect to velocity 2 minus pi by 6 कुछ आता मैंने अभी किया था आप लोग, isn't it? अभी किया था, याद है? डिफरेंशिएट करके करना है बोल के बोला था, फिर करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ ठीक है चलो. Question number 5. A particle is executing an SHF of amplitude 4 centimeter और टाइम पीरियड दे रखा है 4 seconds. The time taken by it to move from positive extreme to half of the amplitude. यानी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? y is equals to एक्सट्रीम के पास है तो a into cos of your omega t लेना है, ठीक है ना? तो y की वैल्यू कितना दे रखा है? हाफ ऑफ योर एम्पलीट्यूड. सो ये हो गया a into cos omega into t. a और ये चले गया तो cos omega t की वैल्यू आ गई 1/2. तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? पाई बाई 3. तो ओमेगा की वैल्यू अपने को मालूम है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 3. तो ये पाई और ये पाई चले गया तो टाइम टी को कैलकुलेट करो. सो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू योर कैपिटल टी बाई 3, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल टी निकाल रहे हैं ना 1. सो टी इज इक्वल्स टू योर कैपिटल टी divided by 2 into 3 that will be equal to your 6. ठीक है ना? t की वैल्यू कितना दिया प्रॉब्लम में? 4 by 6 यानी 2/3 seconds. 1/3 कैसा आएगा बेटा? सादिया 1/3 कैसा आएगा? t की वैल्यू 4 दिया ना बेटा? 4/6 2/3. हाँ चलो ठीक है. A particle is executing simple harmonic motion with a period of t seconds and amplitude a meters. The shortest time it takes to reach a point a by √2 meter from its mean position in seconds will be equal to how much? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने क्लास में बहुत बार करवा दिया था. y is equals to a into sine omega t. ओमेगा की वैल्यू 2 पाई by capital T into small t. a की वैल्यू कितनी दे रखा है? a by √2 that is equals to a into sine 2 पाई by capital T into small t. ये और ये चले गया यहाँ पर तो साइन ऑफ योर 2 पाई by capital T into small t कितना बन गया? 1/√2. 1/√2 मतलब कितना होता है बेटा? साइन 45 दैट मीन्स पाई बाई 4. ए साइन चले गया, ए पाई और ए पाई चले गया तो 2t डिवाइडेड बाई कैपिटल T इज इक्वल्स टू 1/4. ठीक है ना? तो t will be equal to how much one? t is equals to capital T divided by 8. t by 8 seconds आना चाहिए. Sorry, we do this previous problem by circle. The trick phasor diagram. हाँ वैसे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने ऑलरेडी क्लास में बहुत बार करवा दिया, आप लोग वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है चलो. The amplitude of the time period in a simple harmonic motion is 0.5 centimeter and 0.4 seconds respectively. If initial phase is pi by 2 radians, then equation of SHM is equals to how much? तो देखो बेसिक इक्वेशन ऑफ SHM अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करें तो कैसे लिखोगे बेटा? y is equals to a into sin omega t plus phi. I'm not starting from origin. ये बन गया a into sin into ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई by capital T into t प्लस phi की वैल्यू कितनी है अपने पास? pi by 2. और a की वैल्यू कितनी दे रखा है? एम्पलीट्यूड 0.5 into your sin into 2 pi divided by capital T is 0.4 into t plus of your pi by 2. ठीक है ना? तो दिस विल बिकम फॉर मी 0.5 into sin into ये बनेगा कितना बेटा? 5 pi into t plus of your pi by 2.
तो ये बन गया साइन 90 प्लस थीटा का ना, कॉस थीटा बन जाएगा, सो इट इज 0.5 इंटू कॉस 5 इंटू पाई, दिस विल बी द आंसर 0.5। तो कौन सा आ जाएगा बेटा 0.5 कॉस में, तो डी विल बी द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The amplitude of a periodic time of an SHM are 5 centimeter and 6 centimeter respectively, 6 seconds respectively, at a distance of 2.5 centimeter away from the mean position, the phase will be equal to how much? ये भी मैंने ट्रिक के द्वारा बहुत बार करवाया। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे? y is equals to a into sin omega into t। तो y है, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी। y की वैल्यू कितना दे रखा है, डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर, तो y की वैल्यू हो गई 2.5, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू साइन 2 पाई इंटू टी। टाइम पीरियड कितना दे रखा है 6 सेकंड्स, तो यहाँ पर प्रॉब्लम में 6 सेकंड्स दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आ रहा, 1/2 इज इक्वल्स टू 2.5 2 यानी 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ योर 2 पाई टी डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया साइन पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई इंटू टी डिवाइडेड बाई 6। ये 6 और 6 चले गया, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई और पाई भी चले गए, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2 सेकेंड्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनिशियल फेज मतलब क्या, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई टी इज 6 इंटू टी इज 1/2, ये वाला चले गया, तो पाई बाई 6 डी। हाँ नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। A particle starts simple harmonic motion from the mean position, its amplitude is A and time period is capital T. At the time when its speed is half the maximum speed, its displacement is how much? ये भी simple question है, V max is equals to A omega होता है, isn't it? A particle is starting from the SHM from mean position, its amplitude is A and time period is capital T. At what time when its speed is half of the maximum, यानी V is equals to V max का आधा, यानी A ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। तो V की वैल्यू मालूम है अपने पास, ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू A ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा और ओमेगा चले गए, तो A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो पूरे ए स्क्वायर को एक जगह ले लो, तो ये बन जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो y हो गया √3 इंटू A डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी द आंसर। सो √3A डिवाइडेड बाई 2, C विल बी द आंसर। आ गई बात बेटा? सो आई होप एवरी ऑलमोस्ट ऑल पूरे प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करो बेटा, बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करो, स्पीड इंक्रीज करो। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या था, प्रॉब्लम में उसने ऑलरेडी बोल चुका था कि एम्पलीट्यूड द टाइम द स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड होल्ड। ठीक है ना, चलो आई एम नाउ क्लोजिंग द सेशन। आप लोग जरा प्रैक्टिस कर लो, बेसिक क्वेश्चंस अच्छी तरह से करने की कोशिश करो एंड स्पीड बढ़ाओ। बेसिक्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के टाइम वेस्ट मत करो। आप लोग बोल रहे तो समझ भी नहीं आता, लेवल 1 के क्वेश्चन 2-3 बार करो, जो भी मॉडल्स मिलते हैं उसको 1 से 2 बार, और स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाओ। फॉर्मूले अगर याद नहीं आए एग्जामिनेशन हॉल में तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, तो जितना हो सका उतना बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करो, अपना फंडास क्लियर करो एंड ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स 2-3 टाइम्स। ठीक है ना, कोई एक बुक करो अच्छी तरह से करो। इसीलिए एक बार मैंने आप लोग को असाइनमेंट्स नहीं भेजा, क्योंकि आप लोग जो भी एक मेटल कर रहे हैं ना वही एक मेटल से करोगे ना आपका नॉलेज बढ़ जाएगा।
मेरी मेटल, उनकी मेटल, इनके मेटल बोल के बोले तो परेशानी हो जाती है, इसलिए आई हैव बीन kept very low for this side from my side to not to give much DPPs. तो आप लोग बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करिए, फिर एक बार अच्छी तरह से पूरे फॉर्मूले रिवाइजन कर लीजिए, इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय।